Hello, everyone. So we are back live again with Neeraj, who's a representative in National College in Montreal. So just to brief you about Indos Overseas, we are a 14 years old firm helping students to get admission and visas since last 14 years, and we've got really good success. We've got this college on panel recently, and this is a reputed college in Montreal. So, Neeraj, over to you. What would you like to tell us about National College? Okay. First of all, thank you so much, Mr. Narang, and the whole team of Indoors Overseas for bringing up College National to your platform. And we are delighted to speak about our college here today in this training, maybe in this Facebook Live session. Okay. So, Mhm. to start off with, I would like to give you a little introduction about the college and about myself. So, my name is Neeraj Malik, and I am Mhm. working as in-country manager for College National of Science and Technology, Montreal. And Mhm. when it comes to Montreal and especially to College National, so College National is a very fresh college that we have come up with. It's recently been built in Mhm. 2020. Okay. And when it comes to the location of the Mhm. college, so College National is situated in the right prime location of Montreal city. And to be precise, we are in Saint Michel neighborhood, which is very close to the Montreal downtown city, downtown area. Mhm. So, yeah, so Mhm. that's about College National introduction here. So, नीरज क्या डिफरेंस हम सोच सकते हैं कि बाकी कॉलेजेस से नेशनल कॉलेज का? ओके, मुझे लगता है कि मॉन्ट्रियल में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल हैं। एंड स्पेशली अगर हम कॉलेज नेशनल की बात करें तो हमारा कॉलेज उन बहुत हम्म। कॉलेजेस से बहुत डिफरेंट है बहुत सारी चीज़ों में। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमारा जो कैंपस है, इट्स अ वेरी ह्यूज कैंपस एंड इट वाज अ फॉर्मर पब्लिक स्कूल जिसको हमने एक्वायर किया है और अपना हम्म। कैंपस वहाँ पे बिल्ड किया है। सेकेंडली, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को प्रोवाइड कर ओके। रहे हैं कॉलेज के अंदर, वो बहुत ही फ्रेश है और वो बहुत ही यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो कॉलेज के अंदर ही बच्चों को लाइब्रेरीज, रिक्रिएशनल सेंटर्स, इंडोर स्पोर्ट्स रूम, दे हैव अ सेपरेट मीटिंग एंड ग्रीटिंग रूम, यू नो। एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द एकेडमिक सेक्शन, तो एकेडमिक सेक्शन में हमारी जो क्लासरूम्स हैं ऑल आर वेरी हाईटेक एंड वेरी स्मार्ट क्लासरूम्स, क्योंकि हमने हर एक क्लासरूम के अंदर स्मार्ट प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल किए हैं। सो हियर वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू वे ऑफ हम्म। टीचिंग। तो जिसमें कन्वेंशनल वे ऑफ जो टीचिंग था, जिसमें आप हम्म। प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट करते हो, and then it is like how it was before. हम्म। But here at College National, we have changed that style. Okay. And whereas we have हम्म। installed smart projectors in every classroom, जिससे आप सब कुछ प्रोजेक्ट करते हो व्हाइट हम्म। बोर्ड पे, और आप अपने सेंसर्स हम्म। और टच जेस्चर्स को यूज करके, लाइक हाउ वी यूज इट ऑन आवर स्मार्टफोन्स, आप वैसे स्टडी कर सकते हो। एंड स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो वहां से कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, दे जस्ट हैव टू कनेक्ट देमसेल्व्स टू द वाईफाई, एंड वो हर एक चीज अपने पर्सनलाइज डिवाइस पे डाउनलोड भी कर सकते हैं एट देयर कन्वीनियंस। तो इट इज अ वे टू, वंडरफुल। या या जी। ओके एंड क्या कोविड टाइम में कैसे हाउ आर यू ट्राइंग टू कोप अप विद द स्टूडेंट्स, कैसे वो मैनेज कर पा रहे हैं अपनी स्टडी वहां पे? एनी आइडिया वुड यू लाइक टू गिव अस? श्योर। वेल एक्चुअली कोविड की अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो कोविड ने डेफिनेटली अफेक्ट तो किया ही है व्हेन इट कम्स टू दी ऑफलाइन क्लासेस। बट उसको हम वी हैव बीन डीलिंग विद द सिचुएशन सिंस लास्ट 1.5 year नाउ। तो वी कैन नॉट स्टॉप ऑल द थिंग्स, सो फॉर दैट वी हैव कम अप विद न्यू थिंग्स दैट क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर फ्रॉम एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और मे बी ऑनशोर स्टूडेंट्स। सो बच्चों के जिनके, हमारा भी पहला इनटेक था जो मई इनटेक था, उसमें जिन बच्चों के वीजास ग्रांट हो गए, they have already flown to Canada, वो already Canada fly कर चुके हैं, ओके। but they are attending classes online only from their home. So definitely ओके। अभी क्लासेस अभी के लिए ऑफलाइन हमारी ऑनलाइन चल रही हैं, बट अभी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए वी आर डेफिनेटली प्लानिंग फॉर सितंबर, एंड इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली 100% ऑन कैंपस क्लासेस। सो या। ओके एंड क्या फी स्ट्रक्चर एंड आईएलटीएस रिक्वायरमेंट एंड व्हाट आर द अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर द एडमिशन? एज एक हमारे व्यूअर ने भी पूछा, यश गर्ग ने, अबाउट द आईएलटीएस रिक्वायरमेंट, तो उस श्योर। पे थोड़ी लाइट थ्रो करो। Exactly. So before moving on to the IELTS requirements and the academic requirements, Harsh, I would like to inform here about the programs first, that what are our programs that we are offering at College National. So College National is currently at the moment offering you 3 programs. पहला program है project management का, and project management जो program है, that is an advanced level program. The duration of the program is 1 year, और 1 साल का बच्चा प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद 1 साल का पोस्ट स्टडी उसको वर्क परमिट मिलता है।
ठीक है। जो ये टोटल ये जो प्रोग्राम है ये एक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं विद 3 इयर्स मिनिमम ग्रेजुएशन। सो जिन्होंने 3 साल की बैचलर्स कंप्लीट करी हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी रेलिवेंट बैकग्राउंड दे कैन अप्लाई फॉर एनी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन दे कैन अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। Moving on to the Okay. second program, we have a network management program, and network management program is a 2 year duration program. And the best part about network management program is कि ये आप एक undergraduate student को भी promote कर सकते हो और एक graduate student भी इसके लिए apply कर सकता है. So this is an ACS Okay. program जिसके लिए एक undergraduate student भी apply कर सकता है और एक graduate student भी apply कर सकता है. और जो नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसकी ड्यूरेशन 2 साल है। उस 2 साल के प्रोग्राम के बाद बच्चों को 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है एंड 2 साल के अंदर ही बच्चे को 3 महीने की इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम कॉलेज नेशनल एंड व्हिच इज बाय द एंड ऑफ द योर करिकुलम। लास्ट के जो 3 महीने होंगे वो आपके इंटर्नशिप के होंगे। And moving on to the last program, that is entrepreneurship in technology. So I personally really like this program क्योंकि entrepreneurship in technology पहली बात तो अकेला कॉलेज नेशनल एक ऐसा कॉलेज है जो आपको ऑफर कर रहा है प्रोग्राम because it's a very unique combination of merger of your business into technology. So here students will get the exposure of both the programs merged into one. Okay, and इस प्रोग्राम की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। इट इज क्वाइट सिमिलर टू नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम क्योंकि इसकी भी ड्यूरेशन 2 साल है और 3 साल का आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिलता है। ठीक है, अब मैं इसके बाद बात करना चाहूंगा हमारी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की। तो हमारी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं। उसके लिए वी आर ओनली आस्किंग फॉर 55% ओवरऑल इन द लास्ट 1 ईयर ऑफ एजुकेशन दैट अ स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड। बच्चे ने जो लास्ट 1 ईयर ऑफ एजुकेशन अपना कंप्लीट किया, इट कुड बी अ ग्रेजुएशन और अ 12th क्लास और अ डिप्लोमा, उसमें ओवरऑल उसके लास्ट 1 ईयर में 55% होना चाहिए एंड ही इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कॉलेज नेशनल। ओके, now So इसमें now this can be from any educational board or some specific like Punjab board or CBSE or anything? it could be from any board but it has to be a reputed one जो हमारे reputation match it has to be a recognized and reputed one. That is only the requirement but it can be from any board. Okay. Yeah. So moving on to the English proficiency score requirements. So currently at the moment we are accepting IELTS, TOEFL and Duolingo. Sorry, PTE. I'm really sorry, Duolingo is not acceptable, but we are accepting IELTS, TOEFL and PTE. When it comes to the IELTS requirement, so IELTS have a different requirement for an undergraduate student and a separate requirement for a graduate student. तो जो undergraduate students हैं उनके लिए हमारी requirement है 6 overall with one module 5.5 is acceptable. And when it comes to the for a graduate student there are 2 requirements. One is 6.5 overall with one module 5.5 or else it could be 6 no less than 6. Okay. Yes, so that is our IELTS requirement. So how do you see the visa success rate for college national? And कितना गैप, एक व्यूअर ने भी हमसे पूछा है कि कितना गैप एक्सेप्टेबल है आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन। श्योर, वेल जहां तक बात है वीजा सक्सेस रेट की मिस्टर नारंग, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि वीजा सक्सेस रेट आपका हाई कब होता है जब आप गवर्नमेंट के कुछ सेट स्टैंडर्ड या फिर नॉर्म्स को फॉलो करते हो। उसके लिए देयर आर 2 कैटेगरीज। अगर आप एक एसडीएस स्टूडेंट हो तो उसमें आपको 4 कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यू हैव द ऑफर लेटर, यू हैव द जीआईसी फंड, इफ यू आर पेइंग योर 1 year ट्यूशन फी एंड आल्सो यू हैव एन आईएलटीएस स्कोर ऑफ 6 no less than 6, so then your success rate automatically increases. But there are a lot of other factors that affects your visa success rate. Like अगर एक मेडिकल का स्टूडेंट अगर irrelevant प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगा तो वीजा सक्सेस रेट आपका नहीं आ सकता, चाहे फिर आपके एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स भी मीट कर जाए या फिर चाहे आपका आईएलटीएस स्कोर भी मीट कर जाए। बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट because change of the stream. Exactly. So it has to be a relevant program. Also, your intentions has to be clear that what are you exactly looking forward to from this particular course? What is a future scope that you plan after that? And how this program is going to help you and why you are choosing that particular college. So these are all the factors that you need to justify, when you are presenting your file. So that on that actually depends the success of your profile and the visa. Now, there was another question also that you asked me, I actually forgot. So okay, next year के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मैं भी भूल गया वो क्वेश्चन।
Okay. September intake की I guess हम अभी admissions ले रहे हैं, right? Yes. Okay. And So currently, okay. as you know कि अभी Montreal के कुछ 10 एक कॉलेज हैं जो कुछ ऑडिट में चल रहे हैं. Students are really worried. जो वहाँ पे एडमिशन लेके वीजा की उन्होंने फाइल प्रोसेस करी, इट्स बीन अ ईयर. तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं मिस्टर नीरज. Well, update तो students को हमारे से ज़्यादा पहले आजकल students have all the resources, so they are more updated than us. And True. जहाँ तक बात है True. उन 10 colleges की, तो मैं वैसे जैसे कि students को भी पता है कि अब उनसे they are asking for few of the requested documents जिसमें they have to justify their financial statements and also that Right. through which they have applied for this particular college and who's been their representative and all that they've been asking for. So it is a positive sign for us because the embassy is now questioning students that if they can justify and अगर जो बच्चा उसको justify कर देगा, definitely उनके results are going to be out very soon. So now things are picking up very well and क्योंकि अब situation भी better हो रही है, अब medical के लिए आपको appointments भी मिल रही हैं upfront and day by day situation is getting more better and better. So looking at the positive side, so definitely things are going to be very good in coming future, especially for September intake. But when it comes to College National, so we have also already launched our supplementary intake also for this year, that is November intake. So students जिनको those who are a little worried about September intake और जिनके पास अभी documents नहीं complete हुए या जो भी है, they can apply for November intake also that College National is offering them. And especially वो students जिनके अभी 12th के results अभी just out हुए, so they can apply for November intake for this year and they can fly to Canada for their higher education. Yeah. So all 3 courses are available in November intake? Yes. Okay. So एक व्यूअर ने हमसे पूछा है कि ऑफर लेटर का प्रोसेसिंग टाइम कितना है एंड इज देयर एनी एप्लीकेशन फीस फॉर द ऑफर लेटर? Okay, well, there is no application fee as of right now. We are currently offering pre-admission letters for, without any cost. So the processing time for the offer letter is 24 hours to 48 hours. We try our best to make it as short as possible from our side, but usually, the weekend comes in between, so then it gets a little delayed to 1 or 2 days, but we try our best to make, deliver the offer letters within the same day. Okay, sounds good. Yeah. Okay, so in any case, do you have any placement cell or something कि जिसमें students को कुछ help मिल सके to find a job after the programs or while studying? Because as you know, 20 hours allowed होते हैं, every student can work for 20 hours every week. तो उस case में we do we help the students? Well, thank you so much, Mr. Narang, for bringing this up. Okay, because when it comes to College National, so College National is not only just about providing good education and high, excellent education services, but also a lot of student services. That firstly, I would like to tell about the service that you are asking for, that is job. So definitely, College National provides that support to the students when it comes to the jobs, because we have our own portal on which a student can come and register, and through which they can apply for a lot of jobs in Montreal. And especially when it comes to the Montreal, so there are no problems with the part-time jobs. There are almost the double the number of the jobs that you will be able to find in any other metropolitan cities. Okay. Now, apart from that, there are a lot of other student services that College National is, helping and providing to the students. Especially the first support that we are offering is a free airport pickup. When a student lands into Montreal, we provide them with a free airport pickup. And also College National is providing them a quarantine services in which we are providing them accommodations and the meal plans, wherein we are not charging anything for the accommodations here for 14 days. And that is the support that College National is offering. Apart from that, we also do offer a brand new free laptop to the students, which is leased for the duration of the study. So this means you're offering free airport pickup, free quarantine for 14 days, and a free laptop if the student reaches Montreal. Yes, in your exactly. college. Yes. Wonderful benefit to the students. Okay, so another question was, do you guys provide conditional offer letters for the students who are still waiting for their IELTS results or their 12th results? Okay, so we do offer conditional offer letters, but that's only in one case. That is in case of a student who is willing to apply for IELTS exams, or maybe they are willing to revise their IELTS exams. But unfortunately, we are not offering any any other conditional offer letters on the basis of their 12th class marks or results awaiting.
So in such cases we don't provide, but otherwise if a student who has already cleared their class 12th or their graduation, and now if they want to apply for IELTS, or maybe they want to reappear for the IELTS exam, then they can now look forward to that support. Okay. And कुछ फीस के बारे में बात करें मिस्टर नीरज, what kind of fees is there? Sure. Some student gets the rejection, जो कि students का main concern होता है कि फीस रिफंड आने में कितना टाइम लगेगा. ओके, सो जहाँ तक बात है सर फीस की, तो कॉलेज नेशनल सर्विसेज के अलावा बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है स्टूडेंट्स के लिए, एंड मॉन्ट्रियल अपने आप में ही बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, एंड हियर कॉलेज नेशनल इज आल्सो प्रोवाइडिंग यू द सेम, दैट इज अफोर्डेबल एजुकेशन. When it comes to our project management program, the duration of the program is 1 year, and the total cost of that program is 14,500 Canadian dollars. Okay, and in which you are being charged for your hospitalization charges and health insurance, that is already a part of your tuition fee, and also your administration charges are also included in between. Okay, that's for the project management. Right. Apart from that, when it comes to the network management program, so the total program is for 2 years, and the total program cost is 24,980, that is 24,980 Canadian dollars, out of which a student will have to pay the first year tuition fee, that is going to be 13,980, that is 13,980 Canadian dollars, and the remaining 11,000 he can pay in the second year with 2 installments. Okay, so we can do installments as well for the second year. Yes, exactly. Apart from that, when it comes to the last program, that is entrepreneurship in technology. So entrepreneurship in technology is again for 2 years, and the total program cost is 24,950. That is 24,950 Canadian dollars. And the same structure is there. That is, the student can pay the first year tuition fee, that is 13,950, 13,950 Canadian dollars in the first year, and remaining 11,000 could be paid in the second year with 2 installments. Also, right. Apart from this, College National does offer scholarships to the international students as well, wherein we have a simple requirement for the scholarships, which asks the students for an overall IELTS score of 6, no less than 6. And if they have that, IELTS score, they can apply straight away for the $500 Canadian $500 scholarship for the 2 programs, that is network management and entrepreneurship in technology program. Okay. और अगर रिफंड पॉलिसी की बात करते हैं, if student gets any kind of rejection, तो उस केस में रिफंड कितनी देर में आता है? Is there any deduction in the refund? Okay, so when it comes to the rejection of the student visa, तो अगर बच्चे को God forbid ऐसा ना हो, but अगर किसी बच्चे का student visa reject हो जाता है, तो उस केस में कॉलेज सिर्फ आपसे 250 Canadian dollars ही चार्ज करता है, that is the processing charges, which is non-refundable, and rest everything is refunded back to the students within a span of 10 working days. 10 working business days, the college refunds back everything to the student. Okay, so the next question is, जैसे हम उन 10 कॉलेजेस की बात हमने की है कि जो ऑडिट में चल रहे हैं, जिनका वीजा अभी स्टूडेंट्स के होल्ड पे हैं अभी. सो इन केस इफ समबडी इज विलिंग टू चेंज देयर कॉलेज, की उसने ऑलरेडी कहीं पे फीस पे की हुई है और उसका वीजा ऑलरेडी होल्ड पे है, उस केस में डू वी हैव एनी ऑप्शन कि हम उस कॉलेज से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके फीस इधर ट्रांसफर करवाएं एंड वी प्रोसेस द एप्लीकेशन एंड अपडेट द ऑफिसर दैट वी चेंज द कॉलेज? Well, coming on to your question now, I believe Mr. Narang, बहुत सारे colleges ने ये option students को provide भी किया था, because I really believe कि एक education institute कभी भी नहीं चाहता कि उसके students को suffer करना पड़े, but sometimes situation is not in your hand, it is beyond your control. फिर भी कई colleges ने वो support extend किया है international students को कि अगर उनका result नहीं आ रहा है and if they want to change their DLI, the colleges can directly transfer their tuition fee to the other college. Few of the colleges have given this option, whereas few of the colleges have said that if you want to take that refund, you can apply for the refund and you can apply for the other colleges itself. So likewise, there's college, I won't take the names here, but they have directly given that option to the students that they can directly apply for any other college from their college, and then the college will directly transfer the tuition fee to that particular college, wherein the student doesn't have to find any difficulty. So student के पार्ट पर उन्होंने उनको बहुत flexibility भी provide करी है, and which is a quite great support that they have extended to the international students. So now it is up to the student if they want to get stuck to that DLI. That is again not a problem. But if they are looking forward to a better result, they can definitely change their DLIs also now.
but College National is clean and clear, and there is no audit going on, and students are getting visas, and the success rate is really good. Well, yes, definitely. I Wonderful. mean, talking about our college, so College National was never a part of that suspension list, and moreover, we are getting our visas approved. We are continuously getting our Yeah, CAQs approved. because it is Yes. a very new college, and the labs are also new that student can get the first hand experience. Exactly. I mean, we really we are, trying our best to get out of our way to support, to extend that support to the students. I mean, from everywhere possible. For example, I have just spoken about the student services and the academic support that we are providing. But when it comes to the personal support to the students, so Mhm. College National also does provide that support to students in extending their study permits also. Moreover, they help them in finding affordable accommodations as well. I mean, when it comes to the jobs, already we have our portal. We help them with that already. So I don't think so that there is any of the support that an international student looks up to. We are not providing them. We are providing our support to the students for each and everything. ओके सो हम थोड़ा पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे कि कितने दिन में रिफंड आ जाता है बच्चे का इन केस because our try is to get the visa in case but it is rejected so Hmm. ओके जैसा कि मैंने आपको बताया मिस्टर नारंग कि अगर बच्चे का जैसे अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है और बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद जब वो हमारे को इन्फॉर्म करता है तो वो विड्रॉल के लिए वहाँ से रिफंड के लिए अप्लाई करेगा एंड विद इन 10 डेज हम बच्चे की अमाउंट उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हैं विद इन 10 डेज दैट्स द मैक्सिमम टाइम दैट वी आस्क फॉर and everything is being is done in within 10 days only, okay, and we only charge them for 250 Canadian dollars. That's the processing charges that what we ask for. So yes, I believe that is what you asked me. that's really quick. Yeah, yes, you answered it correctly. Okay. Okay, so another viewer has asked us number of classes in a week. Okay. So uh, जैसे हमने यूजुअली सुना मॉन्ट्रियल के में ये कब होती हैं Hmm. ओके वेल एक्चुअली मुझे लगा शायद आपकी आवाज बीच में कट गई है बट मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया था मिस्टर नारंग तो जहां तक बात है क्लासेस की तो द कॉलेज नेशनल इज ऑफरिंग 16 hours a module per week to the international students and we offer our classes 2 to 3 days a week wherein it is up to the student if he wants to complete that module within 2 days he can do that as well and if he wants to complete that in 3 days it is again up to him or up to the student. So now what we are offering is we are offering you morning classes that is from 8 o'clock to 2 o'clock in the afternoon and from 2 o'clock till 8 o'clock in the night we are again offering you the evening classes. So we are providing that flexibility to the students. right. So another question is, what is the minimum deposit to get the offer letter from Santosh Kumar? So I believe you've already answered that question कि एक साल की फीस हमें required होती है to get the unconditional LOA and Yes, also visa prospect से भी अगर हम देखते हैं so that is beneficial to pay 1 year's fees at least. yes, you're right. That's correct. Okay, so another question is under 18 can apply. So कोई age का bar हो कोई minimum age requirement the Okay. admission नहीं, in well, somebody 16 or 17 years well, old, when it comes abhi 12. So can we get him admitted? I mean, when it comes to under 18 students, so unfortunately, under 18 students who cannot apply for College National, so because they'll have to provide us with the guardian there, and the College National doesn't accept application Mm-hmm. under 18. Mm-hmm. Okay, we are accepting Mm-hmm. students with the age of 18 and plus. Okay. Okay. However, when it comes to the gap here, the age acceptable here, so there is Mm-hmm. no capping to the gap here. Okay, so gaps are acceptable but it has to be a justified gap. अगर किसी स्टूडेंट Mm-hmm. ने 3-4 साल का बीच में उसका एकेडमिक गैप है अगर वो Mm-hmm. जस्टिफाई कर सकता है अगर उसने काम किया है तो वो अगर अपने वर्क एक्सपीरियंस से जस्टिफाई कर सकता है तो डेफिनेटली वी वी Mm-hmm. वी डोंट हैव दैट प्रॉब्लम विद दैट स्टूडेंट या Yeah, that even makes sense for the visa application. एग्जैक्टली Okay. So कुछ और बताना चाहेंगे मिस्टर नीरज, different from the other colleges or
something about Quebec, something about Montreal. Yes, why not? I mean, when it comes to Montreal, so Montreal has already been the favorite destination for all the students, and especially when it comes to our partners also. Reason being because it offers you Mhm, all the aspects that a student looks forward to. First thing is that, mhm, it is the most affordable place to be, to live in whole Canada when it comes to your mhm, lifestyle or maybe when it comes to your education. So Montreal in itself provides you that thing in itself. Okay. Second thing is it is also known as the educational capital of Canada because it holds the maximum number of students, in whole Canada, and that's only in Montreal. Montreal not just holding that one position for education, but it mhm, also does offer you a mhm, lot of good exposure to the students, international students especially, because Montreal in itself is a very big hub when it comes to a lot of industries, mhm, especially when we talk about hospitality industry or maybe an IT industry, or you talk about the airlines industry. Air Canada mhm, also have their headquarters situated in Montreal. The government rails of Canada also have their headquarters in Montreal, whereas when it comes to the biggest shipping port of the whole Canada, that is again in itself in Montreal. So when it comes to the jobs aspect, a student can easily look forward to settle down in Montreal itself. And somewhere down the line, I really mhm, believe को एक स्टूडेंट को जो चीजें चाहिए होती हैं अपने एक जगह से जो वो एक्सपेक्ट करता है, एक एक्सपोजर जो एक्सपेक्ट करता है, वो मॉन्ट्रियल उनको mhm, प्रोवाइड कर रहा है एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल mhm, प्राइस. सो I do agree कि बहुत सारे students, they are not that aware about the mhm, current situation. Students are just going by the, information that they are collecting from the market. mhm, But I would request them all to please do their own research. Okay, don't just go by whatever anybody says. You have to do your own research, and then only you can plan to, plan something for your better future. So this is my only request, and I would also like to request our audience and especially to the mhm, students, those who are looking forward to go to Canada, if they have any concerns related to College National or maybe higher education in Canada, they can definitely approach Mr. Narang, Mr. Ankur Narang. He is the managing director of Indoors Overseas, and the whole team of Indoors Overseas would like to welcome you all to to help you with your all questions and queries for the same. So yes, that is it from my side, Mr. Narang. more than welcome. Yeah. Okay, so another question कि हमारे जो कॉलेज नेशनल के कोर्सेज है बिकॉज क्यूबेक इज a French colony, so French वहाँ पे ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, बट हमारे कोर्सेज इंग्लिश में है आई बिलीव. Well, actually, we एंड are. कैसे स्टूडेंट कॉप अप कैसे कर पाते हैं फ्रेंच कम्युनिटी में रहते हुए? एनी आइडिया अबाउट दैट? Okay, thank you so much for bringing this up again. Okay, because I actually almost forgot to tell you about this thing, that College National is not only just offering programs in French and in just one language, that is English, but we also do offer it in French language also. So because we are accepting students from all around the world, so students those who know French, they can look forward to do the same program in French language. And also if a student doesn't know French, he can look forward to apply for the English courses also. सो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में उनको वो प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं. और जहां तक बात है आपकी, क्योंकि कहा जाता है कि क्यूबेक में अगर आप फर्दर सेटल होना चाहते हो तो आपको फ्रेंच आनी बहुत मैंडेटरी है. पहली बात तो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जिनमें आपको फ्रेंच मैंडेटरी नहीं है. एंड इवन इन फैक्ट इफ यू वांट टू मूव आउट ऑफ फ्रॉम क्यूबेक, यू कैन स्टिल लुक फॉरवर्ड टू दैट. बट व्हेन इट कम्स टू क्यूबेक पर्टिकुलरली, तो फ्रेंच को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉलेज नेशनल आपको एक और सपोर्ट एक्सटेंड करता है जिसमें आपको A2 लेवल तक की जो फ्रेंच क्लासेस हैं वो कॉलेज की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं. तो A2 लेवल इज द बेसिक लेवल फ्रेंच जो एक स्टूडेंट कॉलेज नेशनल से सीख सकता है. एंड वो सर्टिफिकेशन लेने के बाद बच्चे को अगर B2 लेवल फ्रेंच सीखनी है तो क्यूबेक की गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे रन कर रही है जिनको स्टूडेंट कंप्लीट करके इवन इनफैक्ट दे कैन गेट पेड फॉर दैट ऑल्सो. तो बच्चों को वहां पर फ्रेंच सीखने के पैसे भी इनफैक्ट मिलते हैं फ्रॉम द क्यूबेक गवर्नमेंट अगर वो फ्रेंच कंप्लीट कोर्स करते हैं तो A2 लेवल तक का कॉलेज आपको कोर्स कंप्लीट करवा रहा है, और B2 लेवल का आप क्यूबेक की गवर्नमेंट से भी कंप्लीट कर सकते हो. और अगर आप फर्दर सेटल होना चाहते हो क्यूबेक में, तो दैट इज द ओनली language level that you need, that is B2 level, and then you can easily look forward to government jobs also. Yeah, सो आप बाइलिंगुअल भी बना रहे हैं स्टूडेंट्स को मतलब? exactly. So any other thing would you like to tell, or we should just wrap up? And in case any student has any kind of question, they can always inbox us and we'll get back to you as soon as possible.
Well, I would just like to thank you, Mr. Narang, and thank you to the whole team of Indoors Overseas once again for bringing up College National to your platform. And actually, I really believe these information and these sessions are really helpful to the students because कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे हमारे पास होती है, रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है, तो स्टूडेंट्स को यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हेल्प कर पाता है सबसे जी जी ज्यादा. And I'm really thankful to you for that, and looking forward to many more sessions like this ahead. And still, I would request the audience that if in case they come across any questions, any doubts, please of feel course. free to contact the team of Indoors Overseas. Thank you. Thank you for being with us, Neeraj. Thank you for today. Thank you so much, sir. Have a great evening. Bye.